next part. So, are you able to see this programming model on the screen? Are you able to see this programming model on the screen? Yes. Yes. So I have explained each and every concept in the programming model. Okay, internal RAM, SFRs, internal ROM, and program counter. I have even explained you last time that there are total number of 21 special function registers. You should by heart know every register with their respective byte addresses. Okay, you should know every register, special function register with their respective byte addresses. Okay, I don't want you to know the bit address. Okay, but if the question is asked about the bit address, I have also given you the elaborated figure in which you have seen that how this bit addressable area, okay, how this bit addressable area is divided into different bit addresses. Okay, so even we have seen the internal ROM. It is a 4K, so 000 to 0FFF. Okay, and then there is a small program counter which is of 16-bit. Even though it is a special function register, it is not included in the second column. Okay, it is separate only because the program counter do not have the byte address. Okay, इसलिए उसको जगह नहीं है वो second column. So other than program counter, you have all the 20 remaining SFRs available in the second figure. Okay, so I think with this we have completed. We'll move further now. If you have any questions, please ask. Last time में मैंने जो भी लिया इसके related कुछ questions होंगे तो you please ask. Then now we will proceed further to understand one important special function register, and that is Acha, have you drawn that PSW, program status word? I think I have asked you to draw the program status word. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now we will be going with the understanding of the special function, program status word. So what is that program status word? And we will see each and individual bits. We will see each and individual bits. Okay. Now we will go one by one. We will start with the LSB. We will start with the LSB. So in the program status word, the first important thing is what is the byte address? Can any one of you tell me what is the byte address of PSW? What is the byte address? Refer to the previous figure जो आपने बनाया था programming model and tell me the program status word byte address. D0H. Yes, the byte address is D0H. So your program status word resides at the byte address given by D0H. So your program status word is also of 8-bit. Okay, so we will go from LSB. LSB, that is bit number 0, and your bit number 0 is P. So write down bit number 0 or LSB, and it is P. So P stands for parity bit. P stands for parity bit. Okay, P stands for parity bit. So I will first explain you what is this parity bit, and before I actually tell you about the parity bit, let me explain you something about the program status word, which already I have explained you in the previous lecture also. मैंने आपको बताया था कि program status word, that is called as a status. So it is giving you the status. Okay, so whenever you do some arithmetic operations, okay, so whatever the result you are getting, other than the result, if I want to reflect, okay, it can be in the form of any of the bits which you can see in the PSW. So that is getting reflected in the PSW. That is getting reflected in the PSW. Okay, so the arithmetic operation or the logical operations will generate. Okay, your arithmetic operation or your logical operations will generate carry. It will generate auxiliary carry. It will generate parity bits. It will generate overflow. Okay, so all these different reflections during the arithmetic and logical operations can be seen in the PSW. So you will start with the LSB, that is a P.
you can see on your screen what is it, what is written for the P. Okay, that is bit number 0. So it is written here that it is a parity bit set to 1 if A has odd number of ones, otherwise reset to 0. Now this P, okay, now one important thing, whether this PSW is bit addressable or byte addressable. Bit addressable. Yes, it is a bit addressable. That means individual bit can be accessed. That is read or written. It is read or written. But as far as these bits are concerned of PSW, okay, this PSW, actually you are using these bits for reading purpose only. We cannot write. क्योंकि अगर दो नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ और वो एडिशन का अगर जो आंसर आ रहा है और वो आंसर में अगर टोटल नंबर ऑफ वंस अगर इवन है, टोटल नंबर ऑफ वंस अगर इवन है, तो ये पैरिटी बीट जो है वो 0 रहेगा, और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो ये पैरिटी बीट 1 रहेगा. Okay, so it is written here, this bit is set to 1 if A has odd number of ones. What is this A now? A का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था. When I am adding two numbers, one number will be by default in the A register, that is the accumulator, and the second number, or you can say the second operand, will be in any of the register, that is R0, R1, or it can be B register. So in our example we have taken B register. So when I want to add two numbers, I have also told you that answer of these two, addition of these two numbers will generate a result, and that result by default will be stored into the accumulator, or A register. Now here we have to see the result. Now once the result is stored into the accumulator, okay, you know that every result will be in the form of binary, zeros and ones. उसी के फॉर्म में रहता है, उसके अलावा किसी फॉर्म में नहीं रहता. So once you have got the result, and if you do the analysis of the result, and if you find that if the result has number of ones, and if the number of ones happens to be odd, अगर number of ones अगर हमने count किए और अगर 3 मिले, number of ones 3 मिले, so it is odd. अगर count 5 मिला, so 5 is also odd. So if number of ones, if counted, and if it founds to be odd number, then this parity bit will be set as 1. So ये हम खुद नहीं कर रहे. This is the 8051 microcontroller who is actually setting this P bit. So this will be set as 1 when answer happens to be in which the number of ones are odd, and this parity bit will be 0 if number of ones are even. Okay. So if number of ones are if number of ones are odd, P is equals to 1, and if number of ones are even, then P is equals to 0. So this is the first bit. Okay, this is the first bit. Okay, now we'll go to the next bit now. Now this bit is undefined. Okay, so reserved may be used as a general purpose flag. So this can be used for future purpose. Okay, as a programmer, I can use this or I can reserve this. So otherwise it is undefined. This is undefined file. So there is a dash. Okay. We'll go to the next bit, that is bit number 2. Okay. So bit number 2 is OV. Okay. Bit number 2 is OV. It is not 0V, it is OV. So what is OV now? Side by side, if you want, you can write down. Okay. While explaining you these bits, you can write down in your own words, or else you can see on the screen also. Now the second bit is OV. Now OV is nothing but overflow. आगे क्या लिखा है? Used in arithmetic operations. Now something more about OV now. Now you know, mostly when you do the addition, subtraction, multiplication, division, everywhere, because you know the data size of 8051 is 8. Okay, it is of 8 bit. So whatever the arithmetic operation, and your 8051 is also 8 bit microcontroller. So I have already told you 8 bit microcontroller की जब बात आती है, it means 8 bit of data bus it is having, as well as 8 bit can be processed at a time. That means 8 bit plus 8 bit. So if I want to add two numbers, so that two numbers has to be in the form of 8 bit. Okay, so 8 bit plus 8 bit. Now you take an example where I am adding 8 bit plus 8 bit now. Where I am adding 8 bit plus 8 bit. Now during this addition, suppose it happens that
because during the addition you have there is a carry generated. Okay, I will just show you. Just here now you know that we are adding the 8-bit plus 8-bit, suppose. Okay, so 8-bit I am giving in general D0, that is 0th bit, then D1, and so forth, dot dot dot. So last will be your D7. D7. Last will be D7. Okay. So if I want to add two 8-bit numbers, okay. So first 8-bit number is suppose 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. So how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and one more 1. Then other second bit, 8-bit is suppose 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, and 1. Okay. Now, for better understanding, I am dividing this into two nibbles. And two nibbles means one nibble comprises of 4 bits. So this lower nibble and this is higher upper nibble. Okay. Here also lower nibble. So ये आपको confusion नहीं होना चाहिए. So I am drawing this. Okay. Now suppose I want to add this 8-bit plus 8-bit. Okay. Now pay attention. And I hope you know this addition. So what is 1 plus 0? 1. 1. 1. 0 plus 1? 1. 1. 0 plus 0? 0. 0. 0. 1 plus 1? 0. 0 with carry 1. 0 carry. Carry 1. 1 carry. 1 plus 1 is 0, carry 1. So your 1 goes here. So 1 plus 0 is 1. 1. That 1 plus 1 is 0 again. And again there is a carry 1. Then 1 plus 1 is 0. 0 plus 0 is 0. So 0 here and again carry 1. Again here 1 plus 1 is 0. 0 plus 0 is 0. 0 is here. The carry is again here. Now see here carefully. 1 plus 1 is 0. That will generate 1 carry. That 0 plus 1 is 1. And there is 1 carry generated. So that carry generation I will show in this manner. Usually we show in this manner so that it shows that this is the carry generated. Now if you see the answer now. If you see the answer. How many bit of answer generated? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. If I ask you the result, now these results, now suppose A register will have this 8-bit of number, and suppose your B register is having this 8-bit of number, and after you do the addition of these two 8-bit numbers, the answer which you get, that is stored into the accumulator by default. Now tell me the status of parity bit. Tell me the status of parity bit. P will be? Odd. Odd. P will be? Yes. Odd. How? 1, 2, and 3. And the size of accumulator will be 8 only. So it will accumulate only this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And if you see the count number of ones, you will see the number of ones happens to be 3. And 3 is the odd number. So tell me P will be 1 or P will be 0.
One. One. Yes. One. Yeah. 1. So when your number of ones comes to be sorry, when your number of ones comes to be odd, your p will be 1. So you have understood. You have understood the parity bit. You have understood the parity bit. And if the number of 1 comes to be even, then your p will be 0. Now come to the next part, that is a overflow now. Now during this addition, can you see here, there is a carry generated from D7 bit. There is a carry generated from the D7 bit. Yes or no? Yes. So whenever the carry is generated from the D7 bit, then there is an overflow. Why there is an overflow? Your accumulator can handle only 8 bits, but there is a carry generated. This is 1. So this becomes your 9th bit. This becomes your 9th bit. So in such conditions, whenever the carry is generated from the D7 bit, then there is an overflow. And whenever there is an overflow, how this is reflected in the PSW? This is getting reflected in the overflow flag. So you have overflow flag given by OB. So in such conditions, whenever the carry generated, your overflow flag becomes 1. Your overflow flag becomes 1. तो एज ए प्रोग्रामर मुझे पता चल जाता है कि एडिशन जब मैं करता हूँ और अगर ओवरफ्लो जनरेट हो गया तो ओवरफ्लो फ्लैग में 1 आएगा. सो दैट इज अ स्टेटस फ्लैग. सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लैग. ये फ्लैग्स है, इंडिविजुअल फ्लैग्स है. ओके. सो जैसे पैरिटी फ्लैग, ओवरव्यू फ्लैग, वैसे बाकी के भी फ्लैग्स हम अभी पढ़ रहे हैं. सो दिस गिव्स अस द स्टेटस कि एडिशन का क्या स्टेटस है, कि ओवरफ्लो हो गया. ओके. ओवरफ्लो हैज जनरेटेड. ओके. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone? So this is important. Overflow flag. So overflow Yes, is sir. overflow flag is set whenever the carry is generated. Whenever there is a carry generated. Okay. And one important thing, always you have to see the last MSB. Now here the answer comes to be this 8 bit, but because of carry generation, this becomes the 9th bit. And 9th bit I do not have provision to store because the size limit of A register is 8. So in this condition, you have to say that overflow flag has occurred. That's why overflow flag is 1. That is why overflow flag is 1. Okay. So this is about the overflow flag. We will move further to understand the next flag, and the next flag is, yes, next flag is yes, RS0 and RS1. RS0 and RS, these two flags are important. These two flags are important. So I can say your 3rd bit and your 4th bit, that is RS0 and RS1. So pay attention, what is this RS0 and RS1, all of you. RS0 stands for register bank selection bit 0, and RS1 is register bank selection bit 1. RS0, RS1. RS stands for register bank selection bit 0. RS register bank selection bit 1. Now RS0 and RS1 together will help us to select any of the one bank from the 4 banks. So how many banks do you have? You have 4 register banks. Bank 0, bank 1, bank 2 and bank 3. Okay. If I am not selecting any of the bank, by default by default the selected bank will be bank 0. And if I want to select some other bank, so in that case, if I want to select bank 1, then your RS0 will be 1 and RS1 will be 0. If I want to select bank 2, your RS0 will be 0, your RS1 will be 1. If I want to select bank 3, your RS0 will be 1, your RS1 will be 1. So actually these 2 bits will help us to select any of the one banks from the given 4 banks. You can select any one of the one banks from the given 4 banks. So this is very crystal clear. These bits I can write. These bits are not for reading, but actually you can write. You can write. Okay. So if both bits are 0 0, that is bank 0 is selected. If it is 0 1, bank 1, 1 0, bank 2, 1 1, bank. Is it fine to everyone? So this is purely for selection of the bank. Is it okay? Shall we proceed? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we have done with the RS1. Now we will move to the next bit.
that is bit number 5, and the bit number 5 is F. This is F0, flag 0. Now this flag 0 is a general purpose user flag. This is not used. Okay. So for this you can just write down flag 0, which is available to the user for general purpose. Flag 0, which is available to the user for general purpose. Now, what does it mean? It means that if I'm a user and if I want to use this flag, I can use, because this is for general purpose. अगर मुझे flag use करना है, तो I can use. So this is a general purpose flag. So this is F0. That is flag 0. Okay. So nothing more explanation required for this F0. We will move to the next flag. That is bit number 6. Bit number 6 is AC, and AC stands for auxiliary carry. AC stands for auxiliary carry. Useful only for the BCD arithmetic operation. ये लिखने की जरूरत नहीं है. For auxiliary carry, you can write down. मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो. For auxiliary carry, you please write down. Write down. This bit indicates a carry from the lower nibble. This bit indicates a carry from the lower nibble. ब्रैकेट में लिखो lower 4 bit during 8 bit addition. Lower 4 bit करने के बाद ब्रैकेट close and continue writing down during 8 bit addition. During 8 bit addition. Full stop. Now, what does it mean? We will see again with this example. See this example now. This is your D0, this is your D1 bit, this is your D2 bit, and this is your D3 bit. Now, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो अभी क्या मैं बता रहा हूँ. Okay. Now, suppose you are doing the addition of two 8-bit numbers, and during the addition, suppose अभी यहाँ पे देखो 1 + 1 0 कैरी यहाँ पे आया ना. So can I say when the carry is generated from D3 bit to D7 bit, D4 bit. Again I am repeating जो मैंने अभी बताया. Can I say these are lower nibbles? Can I say these are also lower nibbles? These are lower nibble and these are higher nibbles. So when the carry is generated from the D3 bit to D4 bit, अब यहाँ पे भी वही हो रहा है. मेरे एग्जांपल में मैंने 1 1 लिया था और 1 + 1 को 0 किया, कैरी 1 आया. ये देखो ये कैरी, ये देखो कैरी. तो जब कभी कैरी जनरेट होता है D3 bit से D4 bit, then your auxiliary carry will be set. Your auxiliary carry will be 1. Your auxiliary carry will be 1. Okay, your auxiliary carry will be 1. अभी यही अगर सिनेरियो मुझे सब्ट्रैक्शन में दिखाना है, ये तो मैंने एडिशन का एग्जांपल बताया, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन है, this number is getting subtracted from this number, this 8-bit number is subtracted from this 8-bit number. अब इस यहाँ पे क्या रहेगा? Now if there is a borrow from 4th bit to 3rd bit position. Now आपको पता है हम सब्ट्रैक्शन में बोरो लेते हैं, तो जब सब्ट्रैक्शन करते करते पहले ये सब्ट्रैक्ट किया, बाद में ये सब्ट्रैक्ट किया, बाद में ये किया, बाद में ये किया, और ये अगर सब्ट्रैक्ट करते करते अगर मैंने बोरो लिया 4th बिट से 3rd बिट को, हम बोरो हायर बिट से लोअर बिट को लेते हैं ना. अगर हम सब्ट्रैक्शन करते करते अगर हमने बोरो लिया फ्रॉम 4th बिट to 3rd bit position, then also your auxiliary carry will be set. Okay, so under two conditions your auxiliary carry bit will be set. The condition number 1, during the addition operation, when you are adding two 8-bit numbers, when the carry generated from the D3 bit to D4 bit, then auxiliary carry will be set. And during the subtraction process, where if you are borrowing from D4 bit to D3 bit, then also your auxiliary carry will be set. In all other cases, auxiliary carry will be 0.
I hope you understood this. Sir, Huh. sir, does this happen only for D3 and D4? Yes. Whenever you talk about auxiliary carry, you have to concentrate on D3 and D4. You have to concentrate on D3 and D4. During the addition, see whether the carry is generated from the D3 to D4, or during the subtraction, be careful whether the borrow is taken from D4 to D3. And in either of the two cases, your auxiliary carry will be set. Okay? Okay, sir. हाँ, इसलिए मैंने जो पहला सेंटेंस लिख के दिया है ना, यू वहां पे आप अंडरलाइन करो। क्या किसको अंडरलाइन करना? अ कैरी फ्रॉम द लोअर निबल, अ कैरी फ्रॉम द लोअर निबल, अ कैरी फ्रॉम द लोअर निबल। लेकिन जब कैरी की बात आता हो तो मुझे पता है मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ, और जब मैं बोरो की बात कर रहा हूँ तो आपको पता है मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो लोअर निबल इज इंपॉर्टेंट। लोअर निबल, जो कुछ हो रहा है लोअर निबल टू हायर निबल में जब हम जाते हैं ना, उसी दौरान ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है। और कंडीशन मैंने अभी आपको बताया, एडिशन में क्या देखना है और सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, so the last bit is remaining, that is your bit number 7. That is your bit number 7. So we will complete the last bit. So bit number 7, can you see your bit number 7? The bit number 7 is called as C or CY, and it is called as a carry flag. Bit number 7 is a carry flag. So used in arithmetic, logic and boolean operations. So this is for your understanding, but you can write down मैं जो carry के लिए बता रहा हूँ। When two 8-bit operands are added, when two 8-bit operands are added, the result may exceed 8-bit. The result may exceed 8-bit. And the ninth bit is copied in the carry bit. And the ninth bit is copied. And the ninth bit is copied in the carry bit. In the carry bit. Similarly, full stop देने के बाद, similarly, during subtraction, if the borrow occurs, similarly during subtraction, if the borrow occurs, the carry bit is set. 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 So for that also the same example. See here. So whenever you are doing the addition, and in the addition if the carry is generated, I have told you this the carry will be copied to the carry bit. Will be copied to the carry bit. Okay. So 9th bit will be the carry bit. ये जो 9 बिट दिख रहा है ना, ये तो 8 बिट हो गए, ये तो हमारे जाएंगे ए रजिस्टर में, और जो कैरी बिट जनरेट होता है ये जाता है कैरी बिट में, ये जाता है कैरी बिट में। ओके, अदरवाइज अगर कैरी नहीं है तो योर कैरी फ्लैग विल बी 0, योर कैरी फ्लैग विल बी 0, योर कैरी फ्लैग विल बी 0. Okay, similarly for subtraction also, agar during the subtraction if the borrow occurs, okay, if the borrow occurs, then also your carry flag will be 1, otherwise it will be 0. So can I say during the carry for the carry flag you have to monitor D7 bit, and for the auxiliary carry you have to monitor D3 and D4 bit. D3 and D4 bit. Okay, so to monitor to know about the auxiliary carry, monitor D3 and D4, and to know about the status of carry you have to monitor only D7. D7 से carry generate होता है या नहीं होता, या फिर हम borrow लेते या नहीं लेते. So depending upon that your carry flag will be set or it will be 0. Is it clear now? Is it clear to everyone? Yes. Is it? Yes, sir. Okay, with this explanation we will proceed further now. So I have done with the flag and their descriptions. Do remember this important, ये question हमेशा पूछा जाता है. Okay, so you should know about this. Now with this understanding we will proceed further to understand. Okay,
Okay. Now this is nothing but this is for okay. I will just explain you. No need to draw this table, but let me explain you this table. ये टेबल यही बताता है कि अगर RS0 और RS1 अगर मैं यूज कर रहा हूँ और अगर ये दोनों बिट 0 0 है तो दैट मीन्स बैंक 0 इज सिलेक्टेड. अगर ये दोनों बिट 0 1 है तो बैंक 1 इज सिलेक्टेड. अगर ये दोनों बिट 1 0 है तो बैंक 2 इज सिलेक्टेड. और अगर ये 1 1 है तो बैंक 3 इज सिलेक्टेड. और वहां पे हमको ये भी बताना है कि एड्रेसेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक 0 मैंने सिलेक्ट किया है तो R0 का एड्रेस है 0 0. यू विल नॉट डिनाई दिस बिकॉज वी हैव स्टडीड दिस. R1 का एड्रेस है 01, R2 का एड्रेस 02, 03, 04, 05, 06, 07. और अगर मैं बैंक 1 सिलेक्ट कर रहा हूं तो उसमें R0 का एड्रेस रहेगा 08, R1 का रहेगा 09, R2 का रहेगा 0A, R3 का रहेगा 0B, dot 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 and so forth. If RS0, RS1 are used for selection of bank 3, then these two bits will be 1 1 and the corresponding register addresses are mentioned here. फॉर एग्जाम्पल R4 का एड्रेस रहेगा बैंक 3 में 1CH. Okay, so this can be asked as a viva question, or sometimes if the question is asked about to explain about the PSW and if it is asked for 10 marks, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली 10 मार्क के लिए हमने क्या क्या लिखना चाहिए. तो एटलीस्ट यू कैन राइट डाउन दिस टेबल. ओके, यू कैन ड्रॉ दिस टेबल. This table is self-explanatory. No detailed explanation is required. This table is self-explanatory. I hope you have understood this table. कोई है जिसको नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी और इट शैल बी प्रोसीड. Shall we proceed? Yes. Yes, sir. Yes. Okay, we will. Yes, Okay, sir. we'll proceed. If you are not asking me question and if you're saying yes sir, you can proceed. I'm assuming you are understanding properly. Okay. Then we will proceed to the next one now. So this is also over. This is also over. This is also over. Yes. I want everyone to write this. Write down the problem now. Write down the problem. Problem में लिखो. Illustrate two different ways to select register bank 1. Illustrate two different ways to select register bank 1. Now this is very important. I want everyone to pay attention. Try to understand the concept properly now. Now with the prior knowledge about the register banks, with the prior knowledge of how do you select the register bank, and with the knowledge of these register banks are divided into 8 registers, R0 to R7, and each register is of 8 bits. We are trying to understand what are the two different ways to select register bank 1. Now they have specifically mentioned that if I want to select bank 1, what are the different ways? So pay attention, you can write down afterwards. आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखो और पेन नीचे रखो और सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो. Now there are two different ways. There are two different ways. We will go one by one. Number one method is by using the instruction. Okay. Now when you are using the instruction, you have to use this instruction. Now I understood that we haven't started with the instruction set addressing mode. Okay, but I will try to explain this. Okay. Now here using instruction, and that also I can use either this first instruction or I can use this instruction. Okay. Now my question is whether your PSW is bit addressable or byte addressable. Bit addressable. Bit addressable. Now bit addressable. Now try to understand the concept of bit addressable. Okay. अब आपका PSW है bit addressable. Point number 1. Point number 2, your PSW is of 8 bit. Okay, your PSW is of 8 bit. Okay, so if I want to select register bank 1, what should be the value of RS0 and RS1? What should be the value of RS0 and RS1? 0 1. 0 1. 0 1. Yes. Can you see here? इसको अभी जिन लोगों को चश्मा है उनको दिखेगा प्रॉपर, जिनको नहीं है उनके लिए मैं बड़ा कर रहा हूँ. See here now. Can you see here 0 1 which is bold? Can you see here 0 1 which is bold? इसका मतलब क्या है?
this is bit B0, this is bit B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. So actually this is the PSW register और उसका मुझे बिट नंबर 3 और बिट नंबर 4 को चेंज करना है, बिकॉज बिट नंबर 3 इज RS0 और बिट नंबर 4 इज RS1. तो RS0 को अगर मैं 1 करता हूँ और RS1 को अगर 0 करता हूँ, तो एक्चुअली आई एम सिलेक्टिंग रजिस्टर बैंक 1. ओके, आई एम सिलेक्टिंग रजिस्टर बैंक 1. सो मूव इज द इंस्ट्रक्शन. मूव, अभी देखो कैसे मूव, क्या मूव हो रहा है. मूव PSW हैश. हैश का मतलब होता है दिस विल बी ट्रीटेड एज अ डेटा, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ डेटा. हैश का मतलब होता है हैश के बाद जो भी आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ डेटा. ओके, सी आई नो दैट यू हैव अंडर. हाँ सर, ते इमिडिएट ऍड्रेसिंग आहे ना हॅश म्हणजे. हॅलो, तुझं झालंय ते इमिडिएट, बाकी लोकांना माहित नाही, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट इमिडिएट एड्रेसिंग राइट नाउ. बाकी लोगों को नहीं पता है. ओके, because those who have come from the diploma they will be able to understand this properly, but जो diploma students नहीं है, so I cannot comment right now about the question what you have asked. मैं सिर्फ जो बता रहा हूँ वो समझो for time भी, आगे हमको ये सब डिटेल में पढ़ना है. ओके, so try to understand this move PSW hash 00001000B. so इसका मतलब क्या होता है, हैश के बाद जो भी हम लिखेंगे that will be treated as data, that will be treated as data. Okay, and these data is moved into PSW, that move into PSW. Okay, so can I say this data is moving into this, so can I say this becomes the source and this becomes the destination. So actually I'm using move instruction to move this immediate data into this PSW. so हम ऐसा अगर मूव कर रहे हैं तो this becomes the source and this becomes the destination. ओके, अब यहाँ पे मैंने जो B लिखा है, B का मतलब क्या है, B का मतलब होता है बाइनरी, B का मतलब होता है बाइनरी. ओके, B का मतलब होता है बाइनरी. सो ऑल जो हमने लिखा है ये सब बाइनरीज में, 0 और 1s में, दीज आर ऑल बाइनरीज. ओके, तो ये जो 8 बिट डेटा है, ये अगर हमने PSW में डाला तो RS0 होता है 1 और RS1 होता है 0, और ये कंडीशन में हम रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करेंगे. ये एक मेथड है बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन. अगर ये इंस्ट्रक्शन पसंद नहीं आ रहा आपको, तो देयर इज दूसरा एक इंस्ट्रक्शन है, वो भी इसी के तरह है विथ सम चेंज. मूव PSW हैश 08H. अब ये B फॉर बाइनरी था, H फॉर हेक्सा, H फॉर हेक्सा. हेक्सा कैसे आया, 0001 लोअर निबल. टेल मी द हेक्सा नंबर फॉर 0001. 8. Yes, it is 8. So can you see here 8 is here, and the upper nibble was 0000. It is this 0. So both instructions are same, लेकिन है कि किसको ये नहीं पसंद आया तो ये लिखो, बस. That is the only problem, or that is the only change. Okay, so this is in total binary, this is in hexa. तो ये इसमें मूव करो या ये इसमें मूव करो, एक ही बात है, एक ही बात है. So this is how you can go to the register bank 1. Now this is the by using instruction. अगर हमको इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करना है, by using the bit level instruction, by using the bit level instruction. अब यहाँ पे ध्यान रखो. Now this is important. Bit level instruction, bit level तक जाना है इंस्ट्रक्शन. Okay, bit level. Now as you have told me that PSW is bit addressable, now I can एक्सेस इंडिविजुअल बिट. एक्चुअली मुझे कौन सी बिट को एक्सेस करना है, मुझे एक्सेस करना है बिट नंबर 3 और बिट नंबर 4, बिट नंबर 3 और बिट नंबर 4. ओके, नाउ जस्ट सी बैक, लुक, गो टू द बैक पेजेस एंड सी द फॉर्मेट ऑफ PSW. सी द फॉर्मेट ऑफ PSW. आपने कहीं पे तो भी PSW.4 लिखा है, आपने कहीं तो भी PSW.3 लिखा है. तो अगर मुझे बिट लेवल में इंस्ट्रक्शन लिखना है तो मैं क्या इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, CLR PSW.4. CLR PSW.4 का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन के बाद मैं डबल स्लैश दे सकता हूँ, डबल स्लैश के बाद जो भी मैं लिखूंगा दैट विल बी द कमेंट. इंस्ट्रक्शन के बाद अगर मैं डबल स्लैश देता हूँ, उसके बाद जो भी कुछ लिखता हूँ दैट विल बी द कमेंट. ओके, तो PSW4 बोले तो ये जो बिट है, बिट 4, वो मुझे 0 चाहिए, तो
use the instruction CLR. बट लेकिन किसको क्लियर करना है? PSW.4. और मुझे इसको सेट करना है किसको? PSW.3 को. तो फॉर दैट देयर इज अ इंस्ट्रक्शन set B. There is an instruction set B. So set B PSW.3 will set RS0 bit. CLR PSW.4 will clear RS1 bit. तो आपके बिट, आप मुझे बात बताओ, ये इंस्ट्रक्शन यूज करो या फिर ये इंस्ट्रक्शन, डोंट यू थिंक दैट I am changing all the 8 bits? I am changing all the 8 bits. Here also I am changing all the 8 bits. लेकिन बाकी बिट्स को क्यों हाथ लगाना जब मुझे सिर्फ ये दोनों को हाथ लगाना है? और ये बिट लेवल इंस्ट्रक्शन होता है. तो बिट लेवल इंस्ट्रक्शन में हम डायरेक्टली CLR या फिर सेट भी यूज कर सकते हैं. CLR यूज होता है उसको जीरो करने के लिए, वो बिट को जीरो करने के लिए, और सेट भी इंस्ट्रक्शन होता है वो बिट को 1 करने के लिए. तो मुझे अगर ये बिट को क्लियर करना है तो मैं वही बिट को क्लियर करूंगा, बाकी बिट को टच नहीं करूंगा. और अगर मुझे ये बिट को 1 करना है तो मैं उसी बिट को 1 करूंगा बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन. बाकी बिट को यूज नहीं करूंगा, बाकी बिट को यूज नहीं करूंगा. Okay. Now my question is whether you prefer going by these instruction or the second method. Which one you think is better? Second. Second, obviously. Second, obviously. यहाँ पे वही भी लिखा है, यहाँ पे वो भी लिखा है. The second approach is better because it does not disturb other bits of the PSW register. अगर बाकी बिट को मुझे कुछ जरूरत नहीं हाथ लगाने की तो उसको मैं क्यों हाथ लगाऊंगा? वो जैसे उनको वैसे रहने दो. सिर्फ मेरा क्या काम है कि मुझे रजिस्टर बैंक 1 सिलेक्ट करना है. So it's better I go with this. It's better I go with this. Do you agree with this now? Have you understood this? Yes. Yes. So I want you to write down. I want you to write down यहाँ से लेके यहाँ तक. Write fast. Sir. हाँ. Any questions? Yes. बोलो बोलो. सर क्वेश्चन में उन्होंने लिखा था illustrate 2 different ways to select register bank 1. हाँ. सर select मतलब सिलेक्ट बोले तो मुझे रजिस्टर बैंक 1 में के रजिस्टर यूज करना है R0 से लेके R7. मैंने आपको बताया था कि अगर मैं रजिस्टर बैंक सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट रजिस्टर बैंक 0 सिलेक्ट होता है. तो रजिस्टर बैंक 0 के जो 8 रजिस्टर है R0 से लेके R7 मैं वो प्रोग्राम में यूज कर सकता हूँ. लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं रजिस्टर बैंक 0 ना यूज करूँ, मैं चाहता हूँ रजिस्टर बैंक 1 यूज करूँ पहले. लेकिन आपको रजिस्टर बैंक 1 तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा ना. तो रजिस्टर बैंक 1 आप कैसे सिलेक्ट करोगे? तो ये दो मेथड है, ये दो yes मेथड. sir, understood. हाँ हाँ. सो दिस इज. फटाफट लिखो, होने के बाद कोई तो भी मुझे बताओ कि सर हमने लिख लिया है, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर. आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है. शैल वी प्रोसीड? लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. ओके. नाउ okay, this thing I will take afterwards. This is also important, but this thing I will say explain you afterwards.
Yes. Write down the heading now. Please write down the heading. Write down the heading as external memory organization. External memory organization. External memory organization. Everyone has written? Yes, sir. हाँ, अभी कुछ भी मत लिखना, आप सिर्फ अभी यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान देना. Now this is also important. Try to understand. Now, in the figure you are seeing 8051. You are seeing external data memory, that is a RAM. You are also seeing external program memory, that is ROM. Okay. My question is 8051 has how many address lines? Your answer is 16. 16. So next question is how much of the memory, tell me the memory capacity, maximum memory capacity which 8051 can handle. 64 Memory, 64 2:16. KB. yes, you are right. 64 KB. 64 KB. So max to max 64 KB I can use. So my third question is, if I want to use 64 KB of memory, मैं सिर्फ memory बोल रहा हूँ, RAM और ROM नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ memory बोल रहा हूँ. So if I want to access 64 KB of memory, that means I can use all 16 address lines. Yes or no? Yes. Yes. Yes, Yes. sir. Now see here this figure now. Now in this figure, here also I am having 64 KB. Here also I am having 64 KB. This is external data memory. This is external data memory RAM up to 64, max to max 64. This is external program memory ROM, which is also max to max 64. Remember, I am talking about external memory. On chip memory की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं off chip memory की बात कर रहा हूँ. So as far as off chip memory is concerned, I can access 64 kilobyte of RAM as well as 64 kilobyte of ROM. That's why you can see here address starts from 000H to FFFFH. Here also the address starts from 000H to FFFFH. Okay, so I can access two memories. Now my third question is, now if I want to access, whether it is possible to access both the memories at a time or one memory at a time. For example, अगर मुझे 0001 एड्रेस लोकेशन पे कुछ एक्सेस करना है, whether that 0001H is for RAM or 0001H for ROM. Again I am saying, अगर मुझे whether I have to access this memory, whether I can access both the memories at a time or one memory at a time. It means that if I want to access the memory location at 0001H, whether this 001H is for RAM or 001H is for ROM. So that is main question. That is main question. So how do you access these memories external RAM? Okay. So ये part हम next lecture में देखेंगे. But before I go, let me tell you one more figure. ये draw मत करो, लेकिन just go through that. ये हम बाद में भी करने वाले हैं. ये हम बाद में भी करने वाले हैं. All of you pay attention. There is one pin. अब मुझे कोई तो भी बताओ कि आप लोगों ने पिन कॉन्फ़िगरेशन लिखा था क्या? पिन डायग्राम बनाया था? हाँ या ना? पिन डायग्राम जिसमें 1 2 3 4 5 6 1 to 40 पिन. हाँ नहीं बनाया था ना? हाँ ठीक. नहीं सर. ठीक है ठीक है. अभी सिर्फ एक बात याद रखना, वो जो 40 पिन है उसमें से एक पिन है, वो एक पिन है EA बार. 40 पिन में से एक पिन है EA बार. EA बार का मतलब होता है एक्सटर्नल एक्सेस, एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस. EA स्टैंड फॉर एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस. और ये बार है, ये बार है.
इसका मतलब this pin will be active when you give 0 and this pin will not be active when you give 1. So out of 40 pin, there is one pin of 8051 which is called as EA bar. EA stands for external memory access. Now listen carefully. When EA bar is connected to VCC, VCC और आप बोलो या फिर 1 बोलो. When EA bar is given as 1 या फिर EA bar is connected to VCC, positive 5 volt. So in that case, what is the scenario? And when you give EA bar is equals to 0, 0 बोले तो ground, 0 बोले तो ground, okay, 0 बोले तो ground. Now under EA bar is equals to 1 or EA bar is equals to 0, then what are the scenarios? So there are two scenarios. Now this scenario we are talking about purely about the ROM, purely about the ROM. Now pay attention जो मैं बता रहा हूँ. Now you know that on chip ROM आपका 4 किलोबाइट है. On chip ROM आपका 4 किलोबाइट है. So when EA bar is equals to 1, that time you can access 4 kilobyte of on chip ROM, as well as if you want to access more than that, you can also access external ROM of 60K. ये 60 plus 4 gives you 64. Okay. So again I'm repeating, when your EA bar pin is equals to 1, या फिर आप EA bar pin को अगर प्लस वोल्ट दोगे तब आप ऑन चिप रोम 4 किलोबाइट का यूज कर सकते हो. इसके अलावा आप एक्सटर्नल रोम 60K का भी यूज कर सकते हो. इसलिए एड्रेस देखो 000 से लेके 0FFF ऑन चिप रोम के लिए और इसके ऊपर 100 से लेके FFF फॉर एक्सटर्नल रोम के लिए. वही दूसरी बात इधर आ जाओ, अगर मुझे ऑन चिप रोम नहीं यूज करना है, मुझे प्योरली सिर्फ एक्सटर्नल रोम यूज करना है, कितने बाइट का, 64 किलोबाइट का, तब EA बार को ग्राउंड कर दो, EA बार पिन को 0 कर दो. तो आप ये कंडीशन में एक्सटर्नल रोम को आप पूरा एक्सेस कर सकते हो 000 से लेके FFFF. ओके, 00 से लेके FFF. ओके. नाउ इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था 8031 के पास रोम नहीं है, वो रोमलेस है. वो बेचारे के पास रोम नहीं है, वो रोमलेस है. तो अगर उसके पास रोम नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं, 8031 का जो पिन है EA बार उसको 0 कर दो और आप बाहर से 64 किलोबाइट का मेमोरी लगा दो. और अगर हम 51 यूज कर रहे हैं तो 51 अगर यूज कर रहे हैं तो ऑन चिप का यूज मत करो, पूरे का पूरा एक्सटर्नल रोम यूज करो. तो EA बार को सिर्फ 0 कर दो और आप पूरा रोम यूज करो. इसलिए 8051 अगर प्योरली है तो ये सिनारियो, 8031 या फिर 501 हम ये कंडीशन यूज करते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? तो सेकंड केस में तो एक्सटर्नल रोम 64K का होगा ना? हाँ हाँ बराबर है. सेकेंड केस में एक्सटर्नल रोम 64K का होगा, फर्स्ट केस में एक्सटर्नल रोम 60K का होगा, क्योंकि इंटरनल ऑन चिप रोम हम 4K का यूज कर रहे हैं और 60K का रोम हमको अलग यूज करना है. यू आर राइट. फर्स्ट केस 60K, सेकेंड केस 64K. एनी क्वेश्चन? Any question from your side? Have you understood this concept? This is important. ये जब मैं पिन लूंगा ना तब ये मैं बताऊंगा. EA बार सिर्फ इतना याद रखना है, एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस. EA stands for external memory access. Is it okay? Fine. Yes, हाँ. Okay. Now I will wind up. Before I wind up, next time I will show you. ये दोनों को भी एट अ टाइम मैं एक्सेस कर सकता हूँ या फिर एट अ टाइम एक्सेस कर सकता हूँ. तो एट अ टाइम अगर एक्सेस करना है तो कैसे करना है, और वो एग्जांपल याद रखना. 0001H, तो 001H रैम के लिए है या 001H रोम के लिए, वो मुझे पता नहीं. तो इसलिए हमको देखना है कि एट अ टाइम हम एक्सेस कर सकते हैं या बोथ एट अ टाइम. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट which we will see in the next week. Okay, so I think tomorrow you have a holiday. We will meet next week. Okay, till that time take care and please revise whatever I am teaching in the class.
यस सर. ओके, अटेंडेंस हो गया क्या योगेश? हाँ सर. हो गया ना? हाँ हो गया सर. ओके ओके ओके, देन यू कैन लीव. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. बाय बाय Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. बाय बाय. हेलो सर. हाँ हाँ, बोलो बोलो. हाँ सर, एक्चुअली मुझे एक डाउट था सर. हाँ बोलो. हाँ सर, इन PSW हाँ सर ओवरफ्लो और कैरी में डिफरेंस क्या होगा? बिकॉज हाँ दोनों. हाँ हाँ, दोनों भी बराबर है. देखो, ओवरफ्लो में क्या होता है, जब D7 से बिट जनरेट होता है ना, तो हाँ. वो टाइम पे वो सिर्फ इंडिकेट करता है ओवरफ्लो फ्लैग में. लेकिन D7 से बिट से जो कैरी फ्लैग जनरेट होता है, सॉरी, जो कैरी जनरेट होता है, वो जो आपका 1 आता है, हाँ. तो वो 1 जो है ना, वो 1 को कहाँ पे रखना है, तो वो 1 को हम रखते हैं कैरी फ्लैग. ओके सर. तो कैरी फ्लैग हमको दोनों चीजें बताता है कि कैरी भी जनरेट हुआ है D7 बिट से, और वो कैरी को भी उसने स्टोर करके रखा है. ओवरफ्लो में सिर्फ इतना बताता है कि D7 में से कैरी जनरेट हुआ है बस. फिर लेकिन दोनों, हाँ हाँ, लेकिन दोनों में दोनों, वन होगा. हाँ हाँ, दोनों पे भी 1 होगा. ओवरफ्लो पे भी 1 और कैरी पे भी 1. लेकिन दोनों के अलग अलग इंपॉर्टेंस भी है. वो जब हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे ना, तब हाँ. वो टाइम पे आपको समझ में आएगा. ओके. दोनों के अलग अलग एप्लीकेशंस भी है और दोनों के अलग अलग यूज भी है. तो वो जब मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ाऊंगा ना, वो टाइम पे वो और क्लियर करूंगा. ओके सर, थैंक यू सर. ओके ओके. If you have any questions, please ask. सर हाँ हाँ सर महेश हाँ बोलतो. महेश. हाँ महेश, बोल बोल. सर तुम्ही सर परवा म्हणालात ना की सर ते 256 बाईटचं ते कॉन्फिगरेशन, ते सर मला एकदा हा. इन शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करा सर. म्हणजे समजलं मला फक्त सर एकदा कोणतं कोणतं रे? ते नाही सर, तुम्ही बोललात की ना 128 बाईट्स आपण दोनदा यूज करू शकतो. टोटल 256 बाईट्स आउट ऑफ. हा हा, म्हणजे ते मला काय म्हणायचं होतं, आपण जेव्हा म्हणतो की 8051 च्या 8051 कडे किती बाईटचं रॅम आहे, तर तुमचा आन्सर काय? 128 बाईट. बरोबर आहे. हा महेश, आवाज येतोय का? हो सर. तर मला विचारायचं आहे की 8051 च्या जवळ रॅम किती साईजचा आहे, अवेलेबल आहे? 128 बाईट्स सर ना. हा, 128 बाईट बरोबर आहे. तर हो. 128 बाईट जो आहे ना, मी तुला याच्यात दाखवतो. हा, आता हा फिगर पहा. हा जो 128 बाईट आहे ना, हा इंटरनल रॅम. हा 128 बाईट मध्ये काय आहे? रजिस्टर बँक 0, रजिस्टर बँक 1, रजिस्टर बँक 2, रजिस्टर बँक 3, बिट ऍड्रेसेबल एरिया आणि जनरल पर्पज रजिस्टर. ह्या गोष्टी आहे 128 मध्ये. हो पण सर. रॅमच्या सोबत अजून दुसरं 128 हे आहे. हे दुसरं 128 मध्ये काय काय? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. टोटल किती स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आहे? 21. 21. ओके. हा, तर हा 128 आणि हा 128 हे दोन्ही मिळून असे 256. तर ऍक्च्युली रॅम मध्ये हे आहे आणि हे पण आहे. ओके. पण ऍक्च्युली ओके. मला जर काही रजिस्टर युज करायचे असेल ना, तर मी हे 128 मधूनच युज करेन. R0, R1, R2 हे जे काही रजिस्टर आहे, किंवा हे जनरल पर्पज रजिस्टर. हे रजिस्टर जे आहेत ना, हे ऑलरेडी 8051 कडे ऑलरेडी आहे, जे मी यूज करू शकत नाही. So the register or the memory which is usable for the user is 128, and other than this 128 which I cannot use, that is 128 special function register. So these are, see, I can use them but I cannot overwrite on that. I cannot overwrite on that. Okay, so these are the special function register. So this 128 plus 128 is 250. and ये आपका ROM है. ये ROM आपका कितना है? 4K. हाँ 4K का. ये आपका ROM 4K का है, इसलिए 000 से लेके 0FFF ये आपका ROM है. हो सर, समजलं. ठीक है ना? हाँ तसं. सर सॉरी सर. हा सर सॉरी बोललो सर. मगाशी सर तुम्हाला ते विचारलं नाही ते हॅशटॅग इमिडिएट ते. नाही नाही महेश, ते तुला तसं तुझं ऑलरेडी हे झालंय ना, तुला माहिती आहे. बाकी लोकांना माहित नाही. त्याच्यामुळे मी तुला शिकायला गेलो ना, तर बाकी लोकांना काहीच कळणार नाही. त्याच्यामुळे सर जेव्हा मी मी ते
त्याच्यामुळे मी जेव्हा ते इन्स्ट्रक्शन शिकवेल ना त्यावेळेस मी ते डिटेल मध्ये घेणार ऍड्रेसिंग मोड्स. हो हो हा सर मी जर कन्फ्युज झालो सर ते डायरेक्ट आहे का इनडायरेक्ट इमिडिएट म्हणून नाही सर दॅट तुम्हाला इज अ बोललो. नाही दॅट इज अ डायरेक्ट बिकॉज डेटा इज मेन्शन इन द इन्स्ट्रक्शन इटसेल्फ म्हणून इट इज अ डायरेक्ट इमिजिएट. इट इज कॉल्ड एज इमिजिएट ऍड्रेसिंग मोड. ओके सर कारण डेटा इज मेन्शन इन द इन्स्ट्रक्शन इटसेल्फ. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज इमिजिएट ऍड्रेसिंग मोड. इमिडिएट. हा थँक्यू सर. ठीक आहे. हो ओके सर. बाय सर. बाय बाय.